Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Now today in this chapter we are going to learn standard 7 social science, and in standard 7 social science chapter number 2, that is motion of the earth. Now what is motion? You know very well about earth. So motion means revolution and rotation. Okay, that what is revolution and rotation, that we will going to discuss in the video. So first of all, have you noticed that the toys that you play with, such as tops and discs, rotate on their own axis? Now you know very well that you are playing with the toys, and certain toys like tops, जिसको हम भमरडा बोलते हैं वो, and discs मतलब जो round आती है discus throw, you know that thing very well. So when you are playing with that, so they rotate मतलब move होना. Okay, they move on their own axis मतलब on their own position, on their own place, so that is axis. Similarly, our earth too rotates on its axis. So the same way as tops and disc are rotated on their own axis, similarly means same, our earth too rotates on its axis. जो earth है वो भी अपने ही place पे rotate करती है, means this is earth. So when it rotates on its own place, okay, so that is we can say on the axis. You must have taken a ride in Ferris wheel in fairs. You know very well that whenever you are going in the fair, मतलब जब मेले में हम लोग जाते हैं, so we are taking the ride in the giant wheel. While the seats rotate around their axis, they also revolve in a circular manner. You know very well that the seats are rotated around their axis. जो मैरी गो राउंड की, या तो ऐसा मैरी गो राउंड होता है तो उसकी जो सीट्स होती है वो क्या होती है, मूव होती है विद द सेम टाइम. ये जो व्हील है वो भी अपने प्लेस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा. लाइक द कैलेस्ट्रियल बॉडीज, कैलेस्ट्रियल बॉडी मतलब सोलर सिस्टम की जो बॉडीज होती है वो बॉडीज. The earth also moves in two ways, rotation and revolution. Not only the earth but the celestial bodies मतलब heavenly bodies, you can say solar system के जो भी planets है वो भी two ways में क्या करते हैं, move करते हैं. Which are the two ways? Rotation and revolution. It's very important. शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आएगा that earth moves in how many ways. So earth moves in two ways. Which are they? Rotation and revolution. The earth rotates on its axis and also revolves around the sun. It is very important as far as the rotation is concerned. So the earth moves on its own axis, and as far as the revolution is concerned, so the earth moves around the sun. I hope it is clear to you. Rotation means what? So moves on its own axis, and revolution means what? Rotate around the sun. The moon and earth are constantly in motion. In motion मतलब वो लोग गति में होते हैं, मतलब स्पीड में होती है. Which two bodies? That moon and earth. Continuously they are moving. It is not like that someday they feel very bored and they think okay चलो भाई आज move नहीं करना है. It is not like that. Okay, constantly मतलब regularly. Okay, they are moving. So you have the picture here. Motion of the earth, rotation, so moving on its own axis, and revolution, that is revolving around the sun. A Ferris wheel in the fun fair. I hope ये आप सब ने इसकी राइड ली होगी. ओके, तो ये क्या होता है, सीट्स तो मूव होती ही है. ओके, बट वो अपने प्लेस पे तो घूमती ही है सीट्स, और ये जो पूरा व्हील है वो भी करता है. तो सीट्स होती है, दैट इज रोटेशन, और ये व्हील पूरा घूमता है. ओके, so that is revolution. So same with the earth. When the earth move on its own axis, so that is rotation, and when the earth taking round or revolving around the sun, so that is revolution. So the question is that, and very important question, 2 marks के question में आपको आएगा. Okay, 2 marks. So what does the rotation of the earth mean? So see, as the earth rotates on its imaginary axis. Now ये जो earth है तो उसकी जो axis है that is the imaginary line. It is not the proper line, or we can say permanent line that we can see. Suppose you are going in the space, so you cannot find that line. So that is imaginary line. The speed of the rotation at any point along the equator is
approximately 1670 kilometer per hour. Now see, when the sun rotates on its own axis, okay, parallel to the equator, ये हमारा equator है. Now I hope equator is clear to you. So what is the approximately speed? So the approximately speed is 1670 kilometer per hour. Now see, imagine स्पीड जो है वो कितनी है 1670 किलोमीटर. The earth take 24 hours to complete one rotation. That is also very important. The question is that how much time does the earth take to complete one rotation? So the earth take 24 hours to complete one rotation. Means जब earth अपनी place पे घूमती है तो वो कितने hours लगते हैं 24 hours. And what is the speed? So 1670 kilometer per hour. Why is the sun seen only during the day and moon at night? How are day and night caused? You must probably have thought about such question. So definitely the questions are there in your mind, that how the days and night occur. Okay, why we can see the sun during the day while the moon during the night. So let's see about that. Before that, what is it? Rotation. So see, the earth rotates like a spinning top on its imaginary axis as at the speed of 1670 km per hour over the equator. This motion of the earth is called rotation. I already told to you that what is rotation. So rotation means to move on its own axis parallel to equator. And what is the speed? 1670 km per hour. The earth takes 24 hours to complete one full circle, and it takes 24 hours to complete one circle. So how many hours? So 24 hours. Now what is revolution? So while rotating on its own axis, the earth also moves around the sun. This motion of the earth is called revolution. Now it is very important. Suppose this one is our sun and this one is our earth. Okay, so earth takes the round at its own axis, that is rotation, that we had already discussed. But rotation तो वो करेगी ही करेगी, but साथ में ये sun को भी turn करेगी. Okay, so जो sun को turn करेगी, that is revolution. Clear? And how many times? See, the earth takes 365 days, means 1 hour, 1 year to complete one revolution around the sun. This period is called a year. So when the earth completes one round, means one revolution, so it takes 365 days, means 1 year. So it should be clear in your mind. As far as rotation is concerned, so 24 hours, and when revolution is concerned, so 365 days, means we can say 1 year. Okay, don't get confused in it. Now very important point, and it will be there in the exam in a form of short note. How are days and nights formed on the earth? So the earth is round, so the sun rays fall on only half of its sun at a time. The other half remains on the other side from the sun. It is daytime, while the sun rays fall on the other side is night. Now see, suppose ये जो है that is the earth and this one is our sun. So sun के जो rays होंगे that will only received by the half part of the earth. Okay, ये जो half part है यहाँ तक ही sun के rays जाएंगे. तो यहाँ तक जो sun के rays जाएंगे means in these area. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? Day होगा. और ये साइड के ऊपर जो सन की लाइट नहीं जाएगी वहाँ पे क्या होगा? नाइट होगा. सेम वे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रोटेशन होता है, तो रोटेट होके ये जो पीछे का पोर्शन है नाइट का वो आगे जाएगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? डे. और डे का पोर्शन पीछे जाएगा, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, सो इट्स डिफरेंट पार्ट्स कम ऑपोजिट टू द सन ऑल्टरनेटली. सो आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू, जहाँ पे डे है वहाँ पे नाइट आएगी, और नाइट है वहाँ पे क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा. द एरिया विच इज़ द एरिया
is in sunlight gradually goes opposite direction of the sun and the area which was in the darkness gradually comes in the night. डेफिनेटली ग्रेजुअली मतलब जनरली. सो जहाँ पे सन की जो लाइट है वो स्ट्रेट आएगी, दैट एरिया रिसीव और फील्स डे, और जहाँ पे सन की लाइट नहीं जाएगी वहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा. दिस इज़ हाउ द डेज एंड नाइट हैपन एंड दैट इज़ द रीज़न. व्हाट इज़ द रीज़न? और यहाँ से क्वेश्चन भी हो सकता है एज फार एज द रोटेशन इज कंसर्न. सो रोटेशन इज कनेक्टेड विथ डे एंड नाइट. ओके, और क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है दैट हाउ डे एंड नाइट अकर. सो डे एंड नाइट अकर्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. Now here you have the diagram that is also very important. Now say this is the sun and this one is our earth. So in this portion, means in this white portion, the sunlight comes directly. Okay, so in this area we have daytime, while as far as this back side is concerned, so the sunlight cannot reach there. So here we have night. So here you can see stars and even moon. Same thing what happened when the sun, when the earth rotate on its axis. So after sometimes what happened, this night comes forward, so it has day, and this day वाला जो एरिया है वो पीछे जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वेन एवर यू आर showing the dark or night, so you have to colored it with black and you have to you have to mention what, so moon and stars. Now one activity is there. So take a globe and a torch. Globe मतलब you know very well, one kind of, yes, जो हम लोग अर्थ का जो मतलब बोलते हैं मैप, so that is globe. Shut the doors and windows of the classroom so that there is a darkness. What you have to do, you have to take one globe. Instead of globe you can take even ball also, and you can do the activity at your home also. And you have to take one torch, and what you have to do, you have to shut the doors and windows of the house or even classroom so that there is a darkness. Illuminate the globe with the torch. Illuminate करना मतलब प्रकाशित करना, लाइट अप करना. ग्लोब को किससे हमें लाइट देनी है, तो वो टॉर्च से. द पार्ट विच इज़ lit सिग्निफाइज. lit होना मतलब जो हमें लाइट से जो कवर होगा, तो सिग्निफाइज मतलब शो करना, इंडिकेट करना. ओके, इंडिकेट डे, वाइल द डार्क हाफ सिग्निफाइज द नाइट. जहाँ पे वो टॉर्च की लाइट जाएगी वो क्या होगा, डार्क, वहाँ पे लाइट होगी मतलब वो डे पोर्शन होगा, और जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी वो पोर्शन क्या होगा, नाइट का पोर्शन होगा. सो यू हैव द डायग्राम हियर. ये टॉर्च है और ये ग्लोब है, और यू कैन टेक बॉल ऑल्सो. तो जो पोर्शन में लाइट जाएगी मतलब यहाँ वाइट पोर्शन में, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ डे. और जहाँ पे लाइट नहीं जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट. दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस बिटवीन अर्थ एंड सन, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ कोजिंग डे एंड नाइट. राइट, यहाँ पे सेम ही है, खाली यहाँ पे टॉर्च है और वहाँ पे क्या था, यहाँ पे सन एंड ग्लोब है, वहाँ पे हमारी क्या होती है, अर्थ होती है. नाउ व्हाट इज रिवॉल्यूशन. सो द अर्थ टेक्स 365 days to complete one revolution around the sun. This period is called a year. We have already discussed that how many days. So 365 days, or we can say 1 year. Okay, and that period is called a year. Revolves around the sun at the speed of approximately 1780. Very important, 1780 kilometers per hour. The earth moves continuously on a fixed imaginary path called orbit. That is also very important. In 1 marks the question is that what is orbit. So the earth moves continuously, okay, without taking any rest. अर्थ को ऐसा लगेगा कि आज मुझे फीवर है, मैं नहीं जाऊंगी. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. कंटिन्यूसली 365 days अर्थ है वो अपनी प्लेस पे, जो फिक्स्ड प्लेस है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमारे जैसे नहीं कि आज हम ये वे से जाएंगे, कल और वे से जाएंगे, आपको क्लास में जाना हो तो एक बार घूम के जाएंगे. नो, फिक्स्ड और है, एंड दैट इज़ इमेजिनरी पाथ. ओके, एक इमेजिनरी लाइन है.
जो परमानेंटली वहाँ पे ड्रॉ नहीं है. सो दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड बट एलिप्टिकल, मतलब ओवल. ये जो राउंड नहीं है, जो पार्ट है रोटेशन रिवॉल्यूशन का, बट क्या है, ओवल है, राइट, ऐसे. This is a reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. It is also very important. Suppose ये sun है, okay, और ये हमारी है earth, और हमने देखा कि वो राउंड नहीं है, उसका जो इमेजिनरी पाथ है वो क्या है, ओवल है. तो अर्थ यहाँ पे है, सो द डिस्टेंस इज टू लॉन्ग. बट सपोज अर्थ यहाँ पे आ गई टर्न करते करते, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. मीन्स वी कैन से दैट थ्रू आउट द ईयर द डिस्टेंस रिमेन नॉट सेम, द डिस्टेंस रिमेन ऑलवेज चेंज्ड. The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780 kilometers per hour that we had already discussed. The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. That is also very important. Suppose ये earth है and moon is the natural satellite of the earth. तो ये moon है वो खाली अर्थ को ही टर्न करेगा, वो सन को टर्न नहीं करेगा. बट ये जो अर्थ है वो अपने प्लेस पे तो घूमेगी और सन को भी टर्न करेगी. The earth makes an angle of 23.50, ये डिग्री ऊपर आएगी, 23.50 डिग्री on its axis and 66.50 डिग्री on its orbit. Now that is also very important कि जो as far as हम लोग एंगल की बात करें तो एक्सिस के ऊपर, एक्सिस मतलब अपनी जो अर्थ प्लेस है उसके ऊपर टर्न करेगी, तो वो कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, 23.50 डिग्री का. और ऑर्बिट पे जब करेगी, मतलब जो सन को टर्न करेगी, तो कब कितना होगा, 66.50 डिग्री. द टिल्टिंग मतलब जिसको हम स्लाइड, जो मतलब पोर्शन स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा क्रॉस होता है. द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस causes the varying length of day and night and also change in season. So what is the reason? जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है अपने प्लेस पे, इसकी वजह से क्या होगा कि जो लेंथ होगी डेज और नाइट की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ईयर का लॉन्गेस्ट डे, ईयर का शॉर्टेस्ट डे. सो व्हाट इज़ द रीज़न? सो द रीज़न इज़ टिल्टिंग ऑफ द अर्थ. हियर यू हैव द पिक्चर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ है, ये मून है, वो अर्थ को टर्न करेगा, वाइल ये जो अर्थ है वो सन को टर्न करेगी. So I hope revolution, rotation and how days and night occur, that is clear to you. And if you like the video, then like it, share with your other friends. And thank you for watching the video. Have a nice day.